Yeah, hello students. How are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 13. Chapter number 13, that is parameter and area. Okay class, now these are our learning objectives. Let's start the chapter. Find the parameter of the following. Find the parameter of the following class. C. This is the shape of rectangular. Rectangular shape. So parameter of rectangle. Parameter of rectangle is 2 into length plus breadth. So plus 2 multiply length क्या होगी यहाँ पर class 1 meter and 1.5 breadth. Okay class. Now 2 multiply 2.5. So 2.5 multiplied by 2 5. So 5 meter. 5 meter. Similarly, this is the also shape of rectangular. Now parameter of rectangle is equal to 2 multiply length plus breadth. Again 2 multiply length is 1.5 and breadth is 2.5. Understand? 2 multiply by 4. So 4 twos are 8. 8 meter. Understand class? Now class, find the parameter of the following squares. Class यहाँ पर हमें स्क्वायर्स का पैरामीटर निकालना है. सो पैरामीटर का अब हम स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए जो साइड्स होते हैं हम उनको ऐड कर देते हैं. सम ऑफ ऑल साइड्स. सो parameter of square is equal to sum of all sides. So 8 plus 8 plus 8 plus 8. So it is 32 centimeter. Similarly, you have to do this sum yourself. Again, you have to add all the sides. Okay. Now class C, peri is a Greek word that means around and meter. Peri क्या एक Greek word है class? उसका means क्या है? Around. And meter is for measure. और meter क्या है? Measure करने के लिए. Okay. So parameter means to measure around a figure. Parameter means to measure around a figure. Class C ये एक figure है. So इसका parameter क्या होगा? जिसकी around की edges हैं. ये सब क्या होगा? इसका parameter है. Okay. Means to measure around a figure. Okay. The length of the boundary of a simple closed figure is its parameter. अब क्लास ये फिगर थी, इसकी जो लेंथ है, उस बाउंड्री की जो लेंथ है, यहाँ पर क्या है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. सो पैरामीटर क्या होगा? इन सबका सम होगा, दैट इज 32. ओके. Therefore, it is measured by measuring the boundary of a given figure. We add the measurement of the given figure. We add the measurement of the given figure. See. Parameter of the figure shown on the right. Class C. Parameter. So we will add the all sides PQ, QR, PQ, QR, RS and SP. Understand? PQ is 100 centimeter, QR is 75 and RS 115, SP 68 meters. So sum of all sides is 358 meters. Now class C, parameter by using a formula. Parameter by using a formula. Parameter of some polygons can be calculated directly by using a formula. Parameter of some polygons can be calculated. हम directly कैसे कर सकते हैं? Formula use करेंगे और अपना parameter को अपना उसकी जो value निकाल लेंगे. Then we will now learn to calculate. We will learn to calculate parameter of a rectangular square by using a formula. अब हम यहाँ पर क्लास अपना फॉर्मूला यूज करेंगे क्लास. पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर. In the rectangle shown alongside, the parameter will be the sum of all its sides. Okay, sum of all its sides. As I told you, class C. ये क्या है? Rectangular breadth
length, length. Understand class? See, parameter, length plus breadth, length plus breadth. So, length plus length, breadth plus length, length plus breadth plus breadth. Now 2 यहाँ पर कितना l हो गए? l plus l 2l, b plus b 2b. So हमने 2 यहाँ पर क्या किया क्लास? कॉमन लिया. So left is l plus b. Parameter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Parameter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. The length and breadth must have the same units while calculating the parameter. क्लास जब भी हम अपना पैरामीटर हो या एरिया हो अपना जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उनकी जो वो होती है यूनिट्स होती हैं हमेशा क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए. सपोज अगर लेंथ मीटर में है तो ब्रेथ भी मीटर में ही हो. अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं, ब्रेथ सेंटीमीटर में और लेंथ मीटर में, तो हम पहले उनको चेंज करेंगे. वी हैव टू चेंज द यूनिट्स. ओके, नाउ एग्जांपल, find the length of the wire required to fence 2 rounds of a rectangular park of length 15 meter and breadth 10 meter. Length क्या है यहाँ पर rectangular park की? 15 meter and breadth 10 meter. Also find the cost of fencing the park at the rate of 4 rupees per meter. क्या C? Length of the park 15 meter, breadth of the park 10 meter. पैरामीटर क्या होता है क्लास रेक्टेंगुलर का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ 15, ब्रेथ 10, तो 2 मल्टीप्लाई 25 50. ओके, 15 प्लस 10 25 and 25 multiplied by 2 is equal to 50 meter. Now class, total wire needed to fence 2 rounds of the park is 50 meter. So 50 multiplied by 2 100 meter. ओके क्योंकि हमारे पास हमने 2 राउंड्स किए थे फेंस के. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹4. ₹4. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 100 मीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 400 rupees. ओके, नाउ पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर. ठीक क्लास, in the square shown alongside the parameter will be the sum of all its sides. Sum of all its sides. Therefore, parameters s plus s is equal to 4 times s. Parameter of a square is equal to 4 into side. Example, find the side of the square whose parameter is 32 centimeter. यस, हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर है, देन हमें क्या निकालना है? उसकी साइड को फाइंड करना है. तो पैरामीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. सो अब ये 4 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा. तो साइड इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 8 32, तो 8 सेंटीमीटर. तो जो अब ये फिगर है यहाँ पर, सो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इनकी वैल्यू है क्लास. अंडरस्टैंड क्लास? नाउ क्लास, parameter of a triangle. The parameter of a triangle is the sum of the measures of the 3 sides. Example, find the parameter of a triangle whose sides 4.5, 4 centimeter, 5.5 centimeter. Parameter of a triangle, sum of its 3 sides. Okay, तो हम क्या करेंगे? उसकी साइड्स को सम करेंगे, देन हमारे पास उसका पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 14 सेंटीमीटर. The parameter of a triangle is 14 centimeter. Now class, come on exercise 13.1. Question number 1, find the parameter. A part is, class, this is a triangle. So side, first side is 3.9 centimeter, 5.5 centimeter, 6.2 centimeter. Class C, find the parameter. So this is a parameter. Understand class? Now question number 1, parameter of triangle is equal to sum of its 3 sides. Okay class. Now first side is 6.2 centimeter and 3.9 centimeter, 5.5
5 centimeters. Okay, class? Understand? Then add them 6.2, 3.9, 5.5. 9 plus 5, 14, 14 plus 2, 16, 6 carry 1, 6 plus 1, 7, 7 plus 3, 10, 10 plus 5, 15. So it is 15.6, 15.6 centimeter. Understand, class? Understand? Now class C. B part, class. B part is parameter of a figure. Parameter of a figure. Okay, class. Now sum of all sides. See, class. 2.5 plus 3 plus 1.5 plus 2.8 plus 3.5 plus 1.2 is centimeter. Now class, add them. 2.5, 3, 1.5, 2.8, 3.5, 1.2. 5 plus 5, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 5, 23, 23 or 2, 25, 5, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 3, 7, 7 plus 1, 8, 8 plus 2, 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 1, 14. It is 14.5 centimeter. Understand, class? Class, जो B फिगर था उसमें कोई रिकॉग्नाइज फिगर नहीं थी, तो मैंने उसको लिखा पैरामीटर ऑफ अ फिगर या शेप. अंडरस्टैंड, क्लास? सो सम ऑफ ऑल साइड्स, देन मैंने सबको लिखा एंड देन मैंने उसको ऐड किया. अंडरस्टैंड? I hope you all have understood very well. Okay, class. Now rest of the part do yourself, class. Now class, come on, question number 2. Question number 2, fill in the parameter of the rectangles. Parameter of the rectangles, class. See, parameter, length and breadth. So parameter is 21, length is 6 centimeter, 4.5 is breadth. Understand? Now we have to find the parameter of rectangle, class. C. So B part we are doing. One is done for us. Now length is equal to 50. Length is equal to 5.5 centimeter and breadth is equal to class 3 meter. So class C, parameter of rectangle is equal to 2 multiply length plus breadth. Understand, class? Class, firstly हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे अपना, देन हम उसमें अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे. देन 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है क्लास हमारे पास? 5.5 एंड ब्रेथ है हमारे पास 3 मीटर. Plus C, 2 multiply 5.5 plus 3, 8.5. Now meter, 8.5 multiplied by 2. 8.5 multiplied by 2, 2 5s are 10. 2 8s are 16 plus 1, 17. So 17 meter. 17 meter. Understand, class? So class, B part. Now class, C part. Now length is 12 centimeter and breadth is 7 centimeter. Now again, class, parameter of rectangle is equal to 2 multiply length plus breadth. Now class, see, 2 multiply length is 12 and breadth is 7. Now 2 multiply 12 plus 7, class, 19. Now class,
2 multiply 12 plus 7, 19. 19 twos are 38. 90 twos are 38 centimeter. Understand class? Understand class? So class C, parameter of B part is 17 meter and C part is 38 centimeter. Understand class? Yes class. Yes class, rest of the parts do yourself. Now class, come on area. We have learned that parameter is the boundary of a figure. क्लास हमने अभी क्या पढ़ा है? पैरामीटर क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द फिगर. बाउंड्री ऑफ द फिगर, what can we say about the surface covered by a figure? अब हम क्लास, ये फिगर है, अब ये तो बाउंड्रीज हो गई उसकी पैरामीटर, लेकिन ये जो सरफेस उसने कवर किया हुआ है वो क्या है? वो व्हाट इज दिस? We can say what we can say about the surface covered by a figure. The amount of surface covered by a figure is known as the area of the figure. Again, the amount of surface covered by a figure, the amount of surface जो फिगर ने कवर किया हुआ है वो known as the area of a figure. Understand class? Just as we need a standard unit for the measurement of length, similarly we need a standard unit for the measurement of area. A square of side 1 unit like 1 centimeter or 1 meter is used as the standard unit of area. Understand? Given here is a square of 1 centimeter. We say that the square has an area of 1 square centimeter. Has an area 1 square centimeter. It can also be written as 1 square centimeter or 1 centimeter square. Understand? Area is always measured in square units. Plus हम जब भी एरिया को मेजर करेंगे तो हम उसकी यूनिट को हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में रखेंगे. अंडरस्टैंड? द फिगर given alongside shows a rectangle of length 5 centimeter and breadth 4 centimeters. See, the rectangle is divided into a number of square of side 1 centimeter. 1 centimeter. The rectangle is covered with 20 such squares. With 20 such squares, therefore the area of the rectangle is 20 square centimeter. Therefore the area of the rectangle is 20 square centimeter. The number of units needed to cover a surface is called its area. Understand? The number of units needed to cover a surface is called its area. Okay. Now, units used for measurement of area. Small surface are measured in square centimeter or centimeter square. Small surface, जो छोटे surface होते हैं क्लास, उनको हम किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर. फॉर एग्जांपल, surface area of a book. Surface area of a book. Large surfaces are measured in square meters or meter square. For example, surface area of a park. Surface area of a park. Still larger surface are measured in square kilometers or kilometer square. For example, surface area of a country. Understand? It is not always possible to measure area by counting squares. Plus, हम हमेशा जो अपना एरिया है वो हमेशा के लिए क्या नहीं कर सकते? काउंट तो नहीं कर सकते ना. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मेजर एरिया बाय काउंटिंग स्क्वायर्स. हम हमेशा अपने एरिया को स्क्वायर्स को काउंट करके नहीं मेजर कर सकते. So to find areas in such cases formulas are used. To find areas in such cases formula are used. जब हमारे पास स्क्वायर को हम काउंट करके अपना एरिया नहीं बता सकते तो हम क्या यूज करते हैं क्लास? फॉर्मूला यूज करते हैं. तो फॉर्मूला इज formula for measuring area of a rectangle. Class C. The rectangular PQRS. PQRS has been divided into squares of 1 centimeter. The area of each square is 1 square centimeter. 1 square centimeter area of rectangle. Number of unit square in the rectangle. Number of unit square in the rectangle. The area of rectangle PQRS is equal to 15 square centimeter.
The area of rectangle PQRS is equal to 15 square centimeter. Count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. If we observe, we will find the following number of squares along the length 5, along the length 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Number of square along the breadth. Breadth is 3. Understand class? If we multiply the 2, we will get 5 threes are 15 square centimeter. Okay, area of rectangle is equal to class length into breadth. Now example, find the length of a rectangular whose area is 150 square centimeter and breadth is 10 centimeter. So area is 150 square centimeter, breadth is 10 centimeter. The formula of area is length into breadth. So 150 area, length, breadth 10. तो क्लास यहाँ पर 10 मल्टीप्लीकेशन में ध्यान इधर आके वो क्या हो जाएगा डिवाइड. सो लेंथ इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 15 centimeter. Understood? Now class, formula for the area of a square. We know that a square is a special kind of rectangle with all sides equal. We know that a square is a special kind of rectangle with all sides are equal. क्या जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होते हैं. यस, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी. ओके, इट मींस इन अ स्क्वायर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ. इट मींस इन अ स्क्वायर लेंथ is equal to breadth. Understand? Area of a square side into side. So area of a square is equal to side into side or side square. Understand? Area is always expressed in square units like square meter, etc. Now come on example class. The area of a square is 64 square centimeter. What is the side of the square? Area is equal to side into side. 64 is equal to side into side. Think of a number which when multiplied by itself gives 64. So 8 8s are 64. We know 8 multiplied 8 is equal to 64. Therefore, side of a square 8 centimeter. Understand? Yes class. Come on exercise 13.2. Question number 1. Find the area of the following by counting square. Area as each square has an area is equal to 1 square centimeter. So class C, A part 1, 2. So 2 square centimeter or 2 centimeter square. Understand? B part is count the squares 1, 2, 3, 4. 4 square centimeter or 4 centimeter square. You can write both the ways. Okay. Rest of the parts do yourself class. Now class, come on exercise. Come on question number 2. Complete the following table. Now class, length, breadth and area. तो क्लास यहाँ पर हमें एरिया गिवन है एंड लेंथ गिवन है. सो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? एरिया गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है. तो हमें लेंथ को फाइंड करना है. ओके क्लास, सी क्वेश्चन नंबर 2 is equal to area is 54 meter square and breadth is equal to 4.5 meter. Now class, yes class, area of a rectangular is equal to length multiply breadth. Class C, length हमें class नहीं पता, so we will put the L and breadth is 4.5. Understand? And area 54 meter. So class, length is equal to 54 upon 4.5. Understand class? So class, put 10. Length is equal to, now class, 9 6 are 54, 9 5s are 45, 5 2s are 10.
So 6 multiplied by 2 is equal to 6 to the 12 meter. Length is equal to 12 meter. Understand class? See again class. एरिया गिवन है 54 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ है 4.5 मीटर. तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. हमें फाइंड करना है लेंथ को. सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो 54 इज इक्वल टू एरिया गिवन था 54, लेंथ ब्रेथ 4.5, लेंथ इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 44.5 मल्टीप्लाई में, देन इसके यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा वो डिवीजन में. तो 54 अपॉन 4.5, मैंने एक पॉइंट को हटाया, देन मैंने 10 पुट किया, सो मैंने उसको कॉमन नंबर से डिवाइड किया, दैट इज 9. 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, so 6 2 जा 12. Length is equal to 12 meter. Understand class? So class, length is equal to 12 meter. Understand? Length is equal to 12 meter. Understand class? Rest of the parts do yourself class. Now area of a triangle. You can use the area of a rectangle to find the area of a right triangle. Draw a rectangle 5 centimeter into 3 centimeter. 5 centimeter 3 centimeter. Draw a diagonal. Diagonal क्या है यहाँ पर क्लास की? AC. Now you have two congruent right angles. Congruent means ये सेम होते हैं, जो एक दूसरे के सेम होते हैं. Area of rectangle 5 centimeter, 3 centimeter, 15 centimeter. Area of each triangle 1/2 of the area of the triangle. So class, 1/2 multiplied by 15, it is 7.5 square centimeter. The area of each triangle is 7.5 square centimeter. Understand class? Now class, diagonal is a line segment which joins two opposite vertices of a figure. Congruent stand for identical. Congruent stand for identical. Now class, example, find the area of the shaded triangle in the given figure. Now class, see, area of rectangle ABCD, 6 multiplied by 4, 24 square centimeter. Area of triangle ABC, 1/2 of the area of the triangle, 1/2 of 24, 1/2 multiplied by 24, 2 12 are 24, it is 12 square centimeter. The area of the shaded triangle is 12 square centimeter. Come on exercise 13.3. Now class, find the area of these triangles. Find the area of these triangles. Now class, see, question number 1, A part. Yes class. So area of triangle. Now class, see, हमारे पास यहाँ पर गिवन है ब्रेथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड क्लास? फॉर्मूला क्या होता है क्लास? 1/2 मल्टीप्लाई b multiplied by h. Breadth into height. Breadth means base into height. So class, see, 1/2 multiply, base कितना है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारे पास 3 सेंटीमीटर. ओके क्लास, 2 3s are 6 and 3 multiplied by 3 is equal to 3 3s are 9 centimeter square. 9 centimeter square. Now class, see B part. यहाँ पर बेस गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड क्लास? नाउ क्लास, सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, 1/2 बेस, 1/2 base is given as 6 centimeter and height is 3.5 centimeter. Now class, see, 2 3s are 6. Now 3 multiplied by 3.5 centimeter is equal to 10.5 centimeter square. Understand class? I hope you all have understood very well.
Now class, A and B part is done. Rest of the part, do yourself class. Now class, come on, area of figures not covering whole squares. Not covering whole squares. Area are some space which do not cover the whole squares or complete squares. अब क्लास सी, यहाँ पर इसने पूरे स्क्वायर को कंप्लीट नहीं किया हुआ, उसने हाफ हाफ स्क्वायर को कंप्लीट किया है. देन to find area of such figures we have to consider half square besides complete squares. Half square besides complete squares. The figure given alongside is covering 10 complete whole. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये complete है. क्लास इसने कवर किया हुआ 10 complete whole squares and 2 half squares. 2 half squares like this. Now you can treat 2 half square as 1 whole square. Class इसको half then इसका half is equal to 1. Now so area of the figure is 10 plus 1 11 square units. Understand? Now estimation of area of irregular shape. Area of irregular shape. St. Flake schools want to make a new playground. वो क्या बनाना चाहते हैं? Playground बनाना चाहते हैं. The shape of the playground is oval. The shape of the playground is oval as shown in the figure. How can the area be calculated? How can the area be calculated? अब क्लास यहाँ पर जो shape है वो oval shape है. क्लास C. We can calculate the approximate area of the playground. Approximate area of a playground. To estimate the area we use a grid. हम क्या use करेंगे? Grid and follow the steps given ahead. Count the complete whole square. सबसे पहले हमारा step 1 क्या होगा? हम जो complete squares हैं हम उनको सबसे पहले count करेंगे. Okay. Then हम step 2 में count करेंगे. Count the half squares. Then we have to count the half squares. Step 3. Estimate the squares to calculate the number of complete squares that can be made. Estimate the squares to calculate the number of complete squares that can be made. Now step 4. Add all the three. The sum is the required approximate area. अब उनको क्या करेंगे? स्टेप 4 में हम ऐड कर देंगे द सम, जो हमारा समा होगा, जो हमारा सम होगा इज द रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट एरिया होगा. नाउ फॉर द प्लेग्राउंड, number of whole square is 28, number of half square is 4. 4 means 2 whole squares, so total area 28 plus 2 30. The area of each square is 1 meter square. The area of the playground is 30 meter square. Understand class? Now class, come on exercise 13.4. 13.4. Find the area of the figure given below. Each square is equal to 1 square centimeter. Now class, count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So area of this figure is 15 square centimeter. Understand class? Now class, rest of the parts do yourself. Now class, your chapter is completed, prepared very well, and we will meet you in next class. Thank you.